ये सोमनाथ का एंट्री पॉइंट है। यहाँ से 500 मीटर अंदर है और अभी निकल रहा हूँ। 10 बज गए, काफ़ी लेट हो गया है। तो देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। यहाँ से दीव निकलूँगा, दीव से फिर भावनगर। तो ये दीव का रास्ता पूरा ही ख़राब है। यहाँ से 80 किलोमीटर है सोमनाथ से, लेकिन पूरा रास्ता ख़राब है। कंस्ट्रक्शन है कुछ तो बिल्कुल सिटी के बीच के गली के अंदर से निकल रहा है। पता नहीं कौन सी जगह है, कोली गाड़ करके कोई जगह है। दीव 15 किलोमीटर पहुंचने वाले हैं और यहाँ बारिश शुरू हो गई है। एकदम अचानक से आई है बारिश।
जो है ना ये बहुत खूबसूरत है। Why is this relevant here?
नागवा बीच। नागवा बीच दीव। तो अभी नागवा बीच दीव पे आए हैं और ये काफ़ी खूबसूरत बीच है। और रास्ता का वीडियो मैं अपने से कैमरा से लिया मैंने। स्विमिंग इन द सी इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड ड्यूरिंग द मानसून। अभी मानसून का सीज़न है यहाँ पे। तो वहाँ दीव लिखा हुआ है, DIU दीव। काफ़ी खूबसूरत बीच है ये, दीव का बीच है। नागवा बीच फेमस बीच है और यहाँ पे एक्चुअली स्विमिंग करना मना है, नीचे जाना ही मना है। अभी मानसून का टाइम है ना, तो यहाँ पे जाना मना है। दादर एंड नागर हवेली है, दमन एंड दीव। टेम्पल है यहाँ पे। पार्क है, डायनासोर पार्क। तो यहाँ पे एक छोटा सा पार्क है, ये डायनासोर पार्क इसको बोलते हैं। ये टेंपल के पास नहीं है, तो सामने टेंपल है। धूप यहाँ बहुत तेज़ है फिलहाल, अदरवाइज बहुत अच्छी जगह है। शाम को यहाँ बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होंगे। ये टेंपल है और ये डायनासोर पार्क है।
टेंपल का नाम क्या है? टेंपल का नाम क्या है नाम?